प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। ट्रंप ने ये प्लेज किया कि टू स्लैप 60% टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स कमिंग इन फ्रॉम चाइना एंड 10% टैरिफ्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज। लेकिन चाइना भी तैयार हो रहा है कि वो इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि चाइना के ऊपर जब टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो चाइनीज़ कंपनीज तो घाटे में जाएंगी, उनको तो नुकसान होगा। चाइना को अमेरिका से भागना पड़ेगा, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनकी तो दौड़ लग जाएगी और दौड़ना पड़ेगा उनको। लेकिन इसमें चाइना इसका जवाब भी देगा, चाइना इसके लिए तैयारी कर रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो इम्पैक्ट है ये पूरी दुनिया पर होगा, सिर्फ एक चाइना के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें जो अमेरिका के बिजनेसेस हैं, अमेरिकन बिजनेसेस, उनके ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा। अगर हम इस पे नज़र डालें तो ट्रंप का ये जो मासिव टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स जो है उसके ऊपर जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप इज़ evaluating हाउ हिज कैंपेन promises might translate into policy when it comes to rolling out the broad-based tariffs that he pledged on the campaign trail. The strategy is not yet confirmed or formed. Multiple sources familiar with the matter, जो कि CNN की ये रिपोर्ट है, The vision is there but the game plan is not. जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं। एक सोर्स ने जो है वो ये कहा कि मेजर डिसीजंस अबाउट हाउ टू फॉलो these strategies and the executing them have yet to be made. कि ये कहा तो है लेकिन इसको कैसे किया जाएगा ये ज़रा मुश्किल होगा। वो क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से द कॉस्ट ऑफ टैरिफ्स इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड अलोंग टू कंज्यूमर्स रादर देन बीइंग बोर्न बाय कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स ब्रॉड। यानी इसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं हो रहा, बनाने वाले पर नहीं हो रहा, बल्कि कंज्यूमर पर भी अफेक्ट होगा। एज ए कैंडिडेट ट्रम्प्स प्लेज्ड to slap 60% tariffs on all goods coming in from China and 10% tariffs on goods imported from all other countries. The way that President Trump looks at tariffs are not in isolation. They are a fundamental and core part of the broader economic strategy, which also includes tax cuts, deregulation, energy diversity, और फिर इसमें ये भी है कि मच ऑफ द लैंडमार्क लेजिस्लेशन फ्रॉम ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म द 2017 टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट इज सेट टू एक्सपायर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, which congressional Republicans already working on how to extend or make it permanent. Trump's economic advisors and the president himself view the forthcoming tariff revenue as a way to offset the cost. Trump's proposed tariffs would raise $2.7 trillion. अब जो ग्रुप है यानी जो लोग हैं इसको ऐसे एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि ये टैरिफ्स लगाने की बात हो रही है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो इसलिए ये टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि इससे जो रेज़ किया जाएगा वो $2.7 ट्रिलियन रेज़ किए जाएंगे। ये एक बिग अमाउंट है। But companies are going to have to develop a tariff strategy and they are going to have to decide whether they will absorb the cost, pass it on to consumers or remove the Chinese content in their goods. ये जो एक एक्सपर्ट हैं जेक, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल फॉरेन ट्रेड काउंसिल, उनकी तरफ से कहा गया है और उन्होंने कहा कि अब ये देखना होगा कि कंज्यूमर पर इस पर असर कैसे पड़ेगा। दी रियलिटी इज़ यू जस्ट कांट मेक एवरीथिंग हेयर। तो इस पे ये देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें अब और हुआ क्या है, इस पे आप ये याद रखें कि ये इसलिए मुश्किल है, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट टू इम्पोज बिकॉज अमेरिका की कंपनीज ऐसी हैं जो अनाउंस कर रही हैं कि इस वजह से उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा। जो कि स्टीव मैडन कंपनी, a $3 billion shoe company, announced Thursday that it would rapidly its Chinese production to avoid Trump's tariffs. It would rapidly to reduce to equal part its Chinese production to avoid Trump's tariffs. Those plans have been in place for a long time in anticipation of a Trump victory, according to Steve Madden's CEO Edward told the news.
We have been planning for potential scenario in which we would have to move goods out of China more quickly. They told Wall Street analyst Thursday, and so as of yesterday morning, we are putting that plan into motion, and you should expect to see the percentage of goods that we sourced from China to begin to come down more rapidly going forward. Like all footwear companies, the majority, about 2/3 of Steve Madden's business, they depend on goods that are imported to the United States. The company noted, and of those imports, 70% are from China. So that's a lot of things to do. That's why they told worked for many years to get new work. So several companies in United States, they are importing goods from China. They are in trouble now. Now they are तो ये जो टैरिफ्स लगाने का है, ये अमेरिका के अंदर के वो बिजनेसेस जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जैसे कि स्टीव मैडन और सेवरल कंपनीज जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उनके अपने बिजनेसेस चाइना के अंदर चल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये ट्रबल क्रिएट हो चुका है। और वो अपने बिजनेसेस या तो चाइना से निकाल रहे हैं, या यहाँ पर जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ की कंपनीज पर भी उनके ऊपर प्रॉब्लम जो है वो आ चुका है। तो वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका के जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी बहुत बुरा आएगा। तो ये एक इकॉनमी की वॉर बन चुकी है। ये इकॉनमी वॉर और बिजनेस वॉर क्या आगे चल पाएगी, या इसके ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स लेना होंगे? क्योंकि देखें, जब आप किसी दूसरे कंट्रीज़ पर टैरिफ्स इम्पोज करने की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आपके अपने कंट्री के अंदर उन तमाम बिजनेसेस और कंपनीज़ पर आएगा जो कि उन बिजनेसेस के साथ चल रहे हैं। वो इंपोर्ट करते हैं उन कंट्री से, और उनका बिज़नेस जो है वो उन कंट्रीज़ के अंदर जा रहा है। तो ये कैसे चल पाएगा, इसके ऊपर अब देखा जा रहा है कि क्या ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से ये स्ट्रेटजी शायद कामयाब ना हो सके, लेकिन ट्रम्प क्या कोई और तरीका ढूंढ लाएंगे इस स्ट्रेटजी को चलाने का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका के अंदर कि ये उनके साथ यानी अमेरिकन कंपनीज़ के साथ भी बहुत बुरा होने जा रहा है। मिलते हैं दोबारा, इजाज़त दें।